want to be in the house of the Lord. You have a desire, but let me tell you, just the desire will not suffice. You will have to work hard. You will just not able to. You got to be focused. You got to be focused because that's where God is going to appear in His majesty. That's the place He will tell you the secret. That's the place the enemy will fly away from you. The house of the God is important. When I'm in the house of Lord, I know I will be saved. Wow, I never knew that being in the house of the Lord is so very important. When you are in the house of the Lord, I'm safe from my trouble. When I'm in the house of the Lord, God brings me honor and I'm stabled by the hand of God. Hallelujah. That means I'm not going to be defeated. That means God is going to be on my side. Hallelujah. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. And today I'm going to speak about the importance of the house of the Lord. I want you to come with me to Psalms 27 and verse 1. मैं चाहता हूं मेरे साथ आज आप भजन संहिता 27वें पद में आ जाइए. भजन संहिता और उसके 27वें पद में आज मैं आपसे कुछ देर के लिए बात करूंगा जहां पर मैं आपको यह सिखाना मांगता हूं परमेश्वर का भवन हमारे लिए क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. लेट्स रीड Psalms 27 verse 4. भजन संहिता 27 उसके चौथे पद में देखिए क्या लिखा हुआ है. एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसके यत्न में मैं लगा रहूंगा. कह रहा है एक तो मैंने वर मांगा है. पहले तो वर की बात कर रहा है और दूसरी बात कर रहा है यत्न की. कह रहा है खाली मैंने ये वर नहीं मांगा है, पर कह रहा है इस वर को पाने के लिए मैं मेहनत भी कर रहा हूं. यानी कि एक वर है जिससे खुदा के बारे में बात कर रहा है. कह रहा है खुदा बाप मेरी ये इच्छा है कि मेरी ये वाली बात पूरी होने पाए. और खाली ये नहीं कह रहा है कि मेरी इच्छा है, पर साथ में ये कह रहा है मेरी इच्छा के साथ साथ मैं उसको पाने के लिए काम भी करूंगा. कह रहा है यत्न करूंगा. यत्न करने का मतलब मेहनत करूंगा. कई बार हमारी इच्छा तो होती है पर हम इच्छाओं के साथ मेहनत कुछ नहीं करना पाते हैं, करना मांगते हैं. पर खुदा का शुक्र करते हैं. दाऊद कह रहा है कि ना ही सिर्फ मेरी इच्छा है पर मैं इस इच्छा के साथ साथ यत्न भी करूंगा. बहुत से लोग जो इस समय टेलीविजन के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा हम लोग को देख रहे हैं, कई बार आपकी परमेश्वर के भवन में रहने की इच्छा तो होती है पर खाली इच्छा से आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाएगी. आपको इच्छा के साथ साथ यत्न भी करना पड़ेगा. You see, David just did not desire to be in the house of the Lord, but he's saying I will not only desire but I will pursue it. I will seek after. That means I'm going to work hard. Many times we have a desire to be in the church, but just the desire to be in the church is not going to satisfy you. But with the desire, God is saying, I must have some action. David is saying, I must have some action. Desire itself will not do it, but with the desire, you need to have something what? Called as action. That means I'm going to work towards it. खुदा के लोगों, खाली desire से सारा काम पूरा नहीं होता है. खाली इच्छा से सारा काम पूरा नहीं होता. आपकी इच्छा तो है मैं परमेश्वर के भवन में जाऊं. आपकी इच्छा तो है मैं परमेश्वर की ब्यूटी को निहारूं, मैं उसकी खूबसूरती को निहारूं, ताकि मैं उसके भवन में जाके सब चीजों को जान लूं. ये आपकी इच्छा तो है, पर ये इच्छा खाली ऐसे पूरी नहीं होगी. इच्छा पूरी होगी जब आप उसके लिए यत्न करेंगे. एक वर यहोवा से मैंने मांगा है और उसके यत्न में मैं लगा रहूंगा. क्यों लगा रहूंगा? ताकि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं. अगर यत्न नहीं करेंगे तो कोई ना कोई बात ऐसी आएगी जो आपके जीवन से यहोवा के भवन को दूर लेके चली जाएगी. कभी बीमारी आएगी. बीमारी जब आ जाएगी तो बोलेंगे भैया इस समय में बीमारी का ज्यादा ध्यान रखना. यहोवा के भवन में हम कहां रह सकते हैं? भैया पैसे की परेशानी आई तो आप बोलेंगे पैसे की परेशानी आ गई. भैया पैसे की परेशानी देखना, अगर भवन में रहेंगे तो पैसे की परेशानी तो खत्म ही नहीं होगी. इसलिए हमें अपने पैसे की परेशानी देखना है. कोई ना कोई चीज आपकी लाइफ में जरूर आएगी जो आपको आपके खुदा से दूर ले जाएगी. इसीलिए वो कह रहा है खाली इच्छा से पूरा नहीं होएगा, पर आपको इसके साथ साथ क्या करना होगा? यत्न भी करना होगा. जस्ट द डिजायर विल नॉट डू इट, बट विद द डिजायर यू हैव टू परस्यू इट. You will have to seek after it. You will have to work hard for it. And when you will work hard,
then the Lord is saying, then David is saying कि जब मैं इसके लिए काम करूंगा तो मैं उसके भवन में रहने पाऊंगा. See, why was he saying that, Lord, this is my desire? सोच के देखिए, desire उसकी होती, मतलब बहुत से लोगों की बहुत कोई desire होती है. Many people have many kind of desire. Many people have different kinds of desire. But what is David saying? I have a particular desire, and that desire is only focused to what? House of God. Why is he saying, I want to be in the house of God? Why is he saying that I just want to see you, God? Why is he saying, I just want to desire you, God? Why is he saying, I just want to behold your beauty? His whole focus is house of God, beauty of Lord, desire towards Lord. Everything is totally focused to God. What? Wow, what a wonderful man. Think about this. ये कैसा इंसान है, कह रहा है कि एक वर यहोवा से मैंने मांगा, उसके यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे कि यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर पर ध्यान करा करूं. The whole desire is the house of God. The whole desire is the beauty of God. The whole desire is God himself. इसके दिमाग में कोई और बात है ही नहीं, सिर्फ खुदा है, खुदा का भवन है, खुदा की खूबसूरती है और खुदा की बातें हैं. कई बार हमें ऐसा लगता है खुदा की भवन की बातें बेवकूफी हैं. कई बार हमें ऐसा लगता है खुदा की खूबसूरती की बातें बेवकूफी हैं. कई बार हमें ऐसा लगता है खुदा के भवन में बार बार जाना, बार बार प्रेयर मीटिंग्स में रहना बेवकूफी है. पर आज मैं आपको खुदा के कलाम से दिखाऊंगा, ये वो डेविड ये वाली बात को कह रहा है जिसने परमेश्वर के भवन को चखा है. ये वो डेविड बात कर रहा है जो परमेश्वर को जानता है. ये वो दाऊद आपसे बात कर रहा है, वो डेविड आपसे बात कर रहा है जिसने एक एक क्षण में परमेश्वर को चखा है और परखा है. He is not a man who has not trusted the Lord. He is not the man who has not tested the Lord. He is a man who has trusted the Lord, and he is the man who has tested the Lord. That's why he is continuously talking about house of God. He is talking about God. He is talking about the desire of God. He is talking about, I want to be in the house of the Lord. You see, no Tom, Dick and Harry will ever understand this revelation if they never had a personal encounter with the Lord. And I'm talking to the Christian who have personal encounter with the Lord. Praise God. We thank God we have people who have a personal encounter with the Lord. But I'm telling you, this personal encounter must last for a longer time. And this personal encounter will last for a longer time when you focus yourself, not just desiring, but working towards it, acting towards it. It is not easy for you to be there in meeting one after another, but that's what David is saying. Not only I'm going to have the desire for the house of God, he's saying I'm going to seek after, I'm going to walk after, I'm going to put my hand into it, I'm going to put my head into it, I'm going to put my finances into it, I'm going to just be focused in doing what I'm doing because I know why I am doing so. मुझे मालूम है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं. दाऊद को ये वाली बात मालूम है क्यों मुझे भवन में जाना जरूरी है. दाऊद को ये वाली बात मालूम है क्यों मुझे उसके भवन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. दाऊद को ये बात मालूम है क्यों खुदा की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों खुदा की तरफ मनोहरता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों खुदा की तरफ निहारते रहना बहुत इंपॉर्टेंट. He knows the secret. You know who is he? He has tasted a lot from his youth. अरे इसने अपने गोफन के अंदर पत्थर को रख के एक ऐसे आदमी को धराशाही कर दिया था जिसकी आवाज सुन के पूरा इजरायली खेमे के अंदर चला गया था. He is the man who knows God. He is the man who trusts the Lord. He is the man who knows to take a stone in his sling and he knows to take a shot by faith, knowing that that shot is going to bring down giant. He doesn't have anything. He has a stick in his hand, yet he says, I'm going to slew your neck and I'm going to give it to the birds of the air and the fowls of the air. He is the one who has stayed in the house of the Lord. He is the one who has trusted the Lord. He is the one who loves the Lord. He is the one who is focused towards the Lord. इसको मालूम है कि मेरी डिजायर परमेश्वर के भवन के अलावा किसी और चीज की नहीं होनी चाहिए. आई एम टॉकिंग टू यू. आर यू फोकस्ड टुवर्ड्स द हाउस ऑफ गॉड, नॉट जस्ट हैविंग अ डिजायर. मेरी इच्छा है कि मैं परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं. आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, खाली इच्छा से पूरा नहीं होएगा. जो लोग फेसबुक के द्वारा हमें देख रहे हैं, इंटरनेट से देख रहे हैं, मैं आपको बताना मांग रहा हूं. Yes, you want to be in the house of the Lord. You have a desire, but let me tell you, just the desire will not suffice. You will have to work hard. You will just not able to. You got to be focused. You got to be focused because that's where God is going to appear in His majesty. That's the place where God will reveal the great stuff to you. That's the place He will tell you the secrets. That's the place the enemy will fly away from you. The house of the God is important. The Lord's presence is important. Lord's presence is in the house where He is sitting down, where He is listening to you. He said to Solomon, सुलेमान से उसने कहा, इस भवन से जो प्रार्थनाएं करी जाएंगी उसकी तरफ मैं अपने कान को लगाए रहूंगा. You know what the word of God says? The house, my house is the place where the people will pray. And he said, I will hear from heaven. He might be sitting in heaven, but house is the place of contact where he listens in the heaven. Let me tell you, if you have been sitting in the houses and praying and you haven't been heard, now it's the time to come to the house of God and sit in the house of the Lord and then cry from the house of the Lord and see whether God hears it from His house or not. Let me tell you, many
people are sitting in their houses and crying to the Lord, but it's the time to turn from your house to the house of the Lord and start giving importance to the house of the Lord as much you have given to your house. I'm not saying that God doesn't hear from your house, but what I'm saying that he will never deny his voice from his own house, because that's his promise. Yes, wherever 2 and 3 are gathered in his name, God is there. But let me tell you, he resides in his house. How much more shall we be then in the house of the Lord? How much more shall we be focused on to the house of God? कितना ज्यादा हमें खुदा की तरफ फोकस अपने आप को रखना है, कितना ज्यादा हमें खुदा के भवन की तरफ देखना है, कितना ज्यादा हमें उसकी ब्यूटी की तरफ देखना है, निहारना, उसकी डिजायर रखना है. David is saying, this is my desire. Now quickly I want to take you to the 4 places, and I'm going to show you what happens when you are in the house of the Lord. Are you excited this evening? I'm excited in this evening. मैं आपको बताना मांगता हूं, मैं बहुत excited और आज आपके बीच में रह के, क्योंकि आज मैं आपके साथ वो चीज बांट रहा हूं जिसको मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत और प्रिंसिपल बनाया. This is my life's principle. If you want to know that how have I been so strong, how have my wife and my son has been so strong throughout these 9 years of ministry, and how the ministry has been progressing up and up and up, and there was not a fall. Let me tell you, I had battles, but every time I had battle, I was in the house of the Lord, with my head down on the floor, praying and crying to the Lord, where the Lord revealed his beauty, where the Lord revealed his glory. And every time I came out of the house of the Lord, I was knowing I'm going to be victorious. The house of the Lord. The house of the Lord. I'm going to tell you 4 things that the Lord is going to do when you are in the house of the Lord. आज मैं आपको दिखाऊंगा 4 चीजें जो खुदा आपके लिए करेगा जब आप उसके भवन में बने रहेंगे. तैयार हैं? तैयार है. First thing is have desire for the Lord. What is the first thing? Have desire. मतलब आपकी इच्छा अगर कोई है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट वर हो, जवान बच्चों, जवान लड़कियों, जवान लड़कों, तुम्हें बताना मांग रहा हूं, तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट वर ये नहीं होना चाहिए मेरी शादी हो जाए. तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट वर ये नहीं होना चाहिए कि मेरे बिजनेस में प्रमोशन हो जाए. तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट वर ये नहीं होना चाहिए मुझे अच्छा बिजनेस मिल जाए. तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होना चाहिए, तुम्हारी सबसे बड़ा वर या तुम्हारी सबसे बड़ी डिजायर ये होनी चाहिए, my biggest gift will be from you, God, that I may abide in your presence. You know what? Abide in your presence. What is he saying? Abide in your presence. What does that mean? That God, you never forsake me from your presence. That means every time I enter the house of God, your eyes are fixed. Oh, Stephen is coming. Oh, Peter has come. Oh, Rushta has come. Do you know there are many people who come to the house of the Lord and Lord will not see them? Because their desire was not God's beauty. Their desire was not God himself. It must be every other thing. But you know what God is focused on? A person who is focused on him. His focus is on him. And that's why he's saying, I will have to work hard towards it. When I come into the house of the Lord, there should not be some hidden agenda in my mind. I'm going to the house of the Lord, let my daughter get married. I'm going to the house of the Lord, let me get some money out of the house of God. Let me, whether things will be arranged. No. Those things should not be the reason behind your mind. The only reason behind your mind to be in the house of the Lord will be, I am going because I want to know what's desire of the Lord for my life, what God wants from my life, what does God want me to do. खुदा मुझसे क्या चाहता है, खुदा मुझसे क्या चाहता है कि जब मैं उसके घर में जाऊंगा तो मुझे मिलेगा. जब ये डिजायर आपकी लाइफ के अंदर आ जाएगी, खुदा बाप एक बड़ा काम करने लगेगा. God will start doing. Let me tell you, आपके सारे आंसर्स के जवाब आपको खुदा के भवन से मिल जाएंगे, पर एक काम करने की जरूरत है. एक वर यहोवा से मैंने मांगा है और उसके यत्न में लगा रहूंगा. किसी और चीज के यत्न में मत लगे रहिए, उसके भवन में. क्यों? ताकि उसकी मनोहरता पे दृष्टि लगा सकूं, ताकि मैं उसकी बातों को गंभीरता से जान सकूं. When you learn to just focus yourself on knowing what God wants from your life, something amazing happens. Are you ready to listen to these 4 things? All right, now I want you to go to the next verse, and this is very powerful. Now he's saying, verse 5, it says like this, for in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. What happens when you are focused in the house of the Lord? He will hide you. He will hide you in the time of trouble. Come on, church. He will hide you in the time of trouble. Come on, somebody says, I will be hidden in the house of the Lord. I will be hidden in the house of the Lord. क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा. इसका मतलब जिस दिन विपत्ति आई, खुदा ने मुझे छुपा लिया. That means why I should be in the house of the Lord. I want to be in the house of the Lord and inquire in the temple and desire God himself. You know why? When I desire God, God desires me. When I desire God, God desires me. Listen carefully, there's a revelation in there. When I desire God, God desires me. How come in my trouble he will not hide me then? Because he desires me. कहने लगा, आप सीक्रेट समझिए, वो सबसे अच्छी चीज मांग रहा था, वो सबसे अच्छी. और यही खून जो दाऊद का है सुलेमान के अंदर था. जब सुलेमान राजा बना तो मालूम क्या कहने लगा? वो कहने लगा, मुझे धन की जरूरत नहीं है, मुझे संपत्ति की जरूरत नहीं है, मुझे लोगों की जरूरत नहीं है. कहने लगा, मैं तो अपने दाएं और बायां नहीं जानता हूं, अगर तुझे मुझे कुछ देना तो अपनी बुद्धि दे. He was asking for the greatest thing. Let me tell you, here that seed that was there
in Solomon, what made him the richest man was from his father David, because he knows the secret of growing. He's saying, my desire is no money, my desire is you. My desire is not the wisdom of people, my desire is your presence, because when I'm in your presence, I'm hidden in your pavilion. My God, my God. That's why he's saying, I gotta be in the house of God. That's where my strength is. इसीलिए दाऊद का बेटा सुलेमान भी सक्सेसफुल रहा और दाऊद भी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इन दोनों के पास खाली एक इच्छा थी, खुदा का भवन, खुदा की इच्छा और खुदा की मर्जी. Are you in the house of the Lord? कहने लगा, this is the secret, this is the secret. कहने लगा, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा. Let me tell you, this is your gift. When you desire God, when you desire your presence, He will hide you in the day of your trouble. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah, church. Come on, in the day of trouble, there's God who can hide me. When I'm in the house of the Lord, I know I will be saved. Come on, church. When I'm in the house of the Lord, I will be saved. When I'm in the presence of the Lord, I will be saved. That's why that lady says, even if I can touch the hem of the garment of Jesus, I shall be saved. She knew it, what happens when you come in the presence of God. She knew it, what happens when I contact the garments. Let me tell you, that was the garment of Jesus. This is the house of Jesus. This is the house where Jesus was. This is the house where Jesus, for which Jesus has sacrificed. You come in contact with this house. You come in the presence of God. God is going to save you from the trouble. So first point is that He is going to save you from the trouble. Now what is the second point? What is the second point? I'm going to read for you the second point. In the secret of His tabernacle shall He hide me. In the secret of His tabernacle He shall hide me. He shall set me upon the rock. Now in Hindi I'm going to read for you. लिखा हुआ है, वह अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा. कहाँ छिपा लेगा मुझे? तंबू के गुप्त. एक तो है कि खाली तंबू में छुपा लेना, दूसरा क्या है? तंबू के गुप्त स्थान में. He will hide me. Now in English what it says like this: in the secret of His tabernacle shall He hide me. Where? First was, for in the trouble He shall hide me in His pavilion. But what is the next one? In the secret of His tabernacle shall He hide me. What is the secret of the tabernacle? Secret of the tabernacle is a place where nobody can enter, but the high priest can enter. That's the secret place. That's the holy place. That's the place where the sins are forgiven. That means when you are in the house of the Lord, your sins are forgiven. Hallelujah. आपके गुनाहों को ढांप देगा. ना ही सिर्फ जब विपत्ति आपकी चारों तरफ खड़ी होगी तो वो आपको विपत्तियों से बचाएगा, पर साथ साथ में कह रहा है वो तुम्हारे गुनाहों को ढांप लेगा. Oh my God. This man who loves God, this man who hides in the temple of the Lord, the first thing that he is going to do is he is going to set you away. He is going to just hide you in the pavilion because there is a trouble. He will save you from trouble. And second thing is he will hide you in the secret place. That means the demon spirit cannot attack you because you have been a sinful person. That's the place where Jesus died. That's the place where Jesus has shed the blood, and the blood speaks for you. The blood of Jesus speaks better things than that of Abel. That blood sets you free, which means in the house of the Lord I am safe from my trouble. In the hide of the house of the Lord I'm secretly kept in His presence. That means my sins are hidden in His presence. So two things happen when you are continuously in the house of the Lord. First, you are taken away from all kinds of trouble. Second, you are hidden. You are hidden in the presence of the Lord. Your sins will be seen no more. परमेश्वर के भवन में सबसे पहली बात वो मुझे छुपा लेता है. दूसरी बात वो मुझे मेरे गुनाहों को ढांप लेता है. Are you excited for these two things? Now I'm going to take you into the third thing that is very, very important. और फिर लिखा हुआ है और चट्टान पर चढ़ाएगा. और चट्टान पर चढ़ाएगा. It says in English, it says, He shall set me upon a rock. That means what? He is going to make me strong. He will make me immovable. You see, He did not only hide me in my troubles, then He just did not take away my sins, but He's saying He will place me where? On the rock. Who is the rock? Jesus. Who is the rock? Jesus. वो मुझे चट्टान के ऊपर रखेगा. इसका मतलब ये है, ना ही सिर्फ उसने मुझे परेशानी से बचाया, पर मेरे गुनाह को ढांप लिया, और गुनाह को ढांपने के बाद उसने पता मुझे किसके ऊपर खड़ा किया? यीशु मसीह के ऊपर खड़ा किया है. और जिसके ऊपर यीशु मसीह खड़ा हुआ है वो घर कभी टूट नहीं सकता. आपको याद आया वो वाला पैराबल? कहने लगा जो मेरी बातों को सुनता उनको मानता वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपने घर को किस पे बनाया? चट्टान पे बनाया. चट्टान कौन है? यीशु मसीह. और यीशु मसीह कौन है? हमारा आसमानी खुदा का बेटा, जिसके कलाम को जब हम सुनते हैं और मानते हैं तो हम उस चट्टान के उस घर के समान होते हैं जिसको चट्टान पे बनाया गया. मैं आपको बताना मांगता हूं, धूप आएगी कुछ नहीं कर सकती है, बारिश आएगी कुछ नहीं कर सकती है, थपेड़े पड़ेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता है, आंधियां आएंगी कोई कुछ नहीं कर सकता. मालूम क्यों? Because this house is made on the rock. क्योंकि ये चट्टान पे बनाया गया. That means दुनिया की कोई सामर्थ आपको हिला नहीं सकती है.
कोई परेशानी आपको हिला नहीं सकती. Wow, I never knew that being in the house of the Lord is so very important. When you are in the house of the Lord, I'm safe from my trouble. When I'm in the house of the Lord, I'm safe from my sin. When I'm in the house of the Lord, God brings me honor and I'm stabled by the hand of God. Hallelujah. जब मैं परमेश्वर के भवन के अंदर रहता हूं तो वो मुझे क्या करता है? वो मुझे परेशानियों से छुड़ा लेता है, मुसीबतों से छुड़ा लेता है. जब मैं परमेश्वर के भवन में रहता हूं तो वो मेरे पापों को ढांप देता है. जब मैं परमेश्वर के भवन में रहता हूं तो वो मुझे यीशु जैसी चट्टान के ऊपर खड़ा करता है जिस पे शैतान अपने चाहे जितने वार कर ले कोई असर नहीं करता है. इसका मतलब ये मैं स्थिर रहूंगा. अपनी सारी ताकत लगा लो तो मेरा कुछ नहीं कर सकते हो. अगर यहोवा मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? Nobody can stand against me. You know why? I know the secret. Now I know the secret how to hide from the trouble. Now I know the secret. I know the secret how to hide from my sins and hide away the sins and wash away the sins. Now I know the secret how to be strong and to be immovable. You know why? It is the house of God. It's a desire towards God. It is to be focused on the Lord and love God. Now the next thing, this is very important. And then it says, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा. In English it says, and now shall my head be lifted up above my enemies round about me. That means my enemies will be down, I will be up. That means I'm not going to be defeated. That means God is going to be on my side. Hallelujah. This is my Lord. This is my Lord. This is my Lord. And then the verse 6 finishes like this. And it says, therefore will I offer in his tabernacle sacrifice of joy. I will sing. Yes, I will sing praise to the Lord. I just love that. It says like this, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा. इसका मतलब यह है कि मेरी कुर्बानियों के अंदर खुशी दिखाई देगी. इसका मतलब यह है, in every sacrifice that I am doing, I'm not going to be painful, I'm not going to be crying. Every sacrifice that I will bring to the house of Lord, there's going to be joy in it. कई बार हम परमेश्वर के लिए बड़े बड़े बलिदान तो चढ़ाते हैं पर उसके अंदर खुशी नहीं होती है. पर कहने लगा कि खुदा बाप मेरे शत्रुओं के ऊपर मुझे बुलंद करेगा, परेशानियों के ऊपर बुलंद करेगा, मेरे पापों के ऊपर मुझे बुलंद करेगा, मेरे सर को ऊपर करेगा. और कहने लगा कि जब मैं परमेश्वर के भवन में आऊंगा तो ऐसे बलिदानों के साथ आऊंगा जिसके अंदर स्तुति होगी. I am going to be in the house of the Lord with the sacrifice of praises. That means everything that you see, that there is humility. There is humility. He's saying that I'm just not going to be in the house of God to pray, but he's saying I'm going to come sacrificially and praising God. That means whenever I'm going to offer any sacrifice, with that sacrifice there's going to be the praise that will go up. There's going to be praise that will go up. There will be the praise that will go up. इसका मतलब यह है कि हर एक बलिदान के अंदर बहुत ढेर सारी praises होंगी. Let me tell you, if you do not know God, you will be sacrificing, but there's going to be no praises. But when you will know God, you will be having the sacrifices, and with the sacrifices, you will have the praises, and the Lord from the heaven will listen. The house of God. Why to be in the house of the Lord? I got to be in the house of the Lord. One, because when I'm in the house of the Lord, Bible says he saves me from the trouble. Why should I be in the house of the Lord? When I'm in the house of the Lord, he hides me in the secret place. That means he hides my sin and my enemy cannot see. You know, there's only one secret place where the enemy cannot see. You read that in Job, there's a place that the lions have not trodden. There's a place where that wild bird has never seen. There's a place that the wild beast never knows. एक ऐसी जगह है जहां पर उकाब पक्षी की नजर नहीं पड़ सकती है. एक ऐसी जगह है जहां पर शेरों का दल हमला नहीं बोल सकता. You know what is that secret place? There's the presence of the Lord. That means a sin cannot be seen in that place. वो मेरे गुनाहों को छुपा लेता है. वाह, मुझे परमेश्वर के भवन में इसलिए रहना है क्योंकि जब मैं परमेश्वर के भवन में रहता हूं वो मेरे सारे शत्रुओं से मुझे जिता देता है. वो मेरी सारी परेशानियों से मुझे निकाल लेता है. वो मेरे सारे गुनाहों को ढक लेता है. वो मेरे दिल के अंदर स्तुति रूपी गीतों को देता है. That's why I got to be in the house of the Lord. He's saying, I don't desire anything. I don't desire anything. I don't desire anything. I desire the presence of the Lord. Solomon was wise. David was wise. Are you going to be wise? Are you going to be wise? Are the people who are watching us going to be wise? Are you going to be wise? Are you going to desire for God? Are you going to desire for the things of the Lord? Are you going to desire his beauty? Because it is in his beauty, it is in him that God is going to save you. My friends, I'm telling you, don't desire anything. Everything is coming and going. Everything is fleeting. Everything is passing away. But this will never pass away. You know what Jesus said about Mary? He said that
इसने तो वो उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे कभी न लिया जाएगा. It was said about Mary, she has chosen the best part. You know what's the best part? The best part is not to work. The best part is not to be worried. The best part is to leave apart everything and sit in the presence of the Lord. Why? Because He's the same God. You can be in the same boat while you are trying to get the boat away. Jesus can simply stand up when you are tired and say, "Hey storm, you shut down. Let the boat go on the other side." And the boat immediately goes on the other side. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं जब खुदा के भवन में आप बने हुए हैं, क्योंकि वो खुदा है जो तूफान को देके डांट देता है और एकदम कश्ती दूसरी तरफ लग जाती है. He is an amazing God. You got to learn to rest in Him. You got to learn to relax in Him. You need to rest in Him. You know what? When you work and your rest and your focus is God, it is going to be successful. It is going to be successful. It is the house of God. Don't neglect the house of God. Don't look down at the house of God, because it is the house of God that has built your life. आपके बच्चे अगर बन गए हैं तो परमेश्वर के भवन की वजह से बने हैं. आपकी लाइफ जो बन गई है इसलिए बनी है क्योंकि उसमें परमेश्वर के भवन की आशीषें आ गई हैं. आपके परिवारों की परेशानियों को उसने हटाया है. आपके गुनाह को उसने धो दिया है. आपको चट्टान पे उसने प्लेस किया है. Haven't you seen how beautiful your life has become? That's why I'm saying stay in the house of the Lord above everything. आइए दुआ करें. Father, I just want to thank you for this moment. I want to thank you for this hour that you have given to us. And I pray, God, that let the church continually grow in your presence. Let the church continually grow in your presence. प्रभु, तेरे भवन को छोड़ किसी और चीज की डिजायर ना करें. तेरे भवन को छोड़ किसी और चीज की इच्छा ना करें, क्योंकि तेरे भवन की इच्छा में हमारी सुरक्षा है. क्योंकि तेरी भवन की इच्छा में हमारा प्रोटेक्शन है. खुदावन, आज अपने आप को, अपनी कलीसिया को और हर एक व्यूअर को जो इस समय हमें देख रहा है आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं, इनको बरकत दे. बरकत दे आसमान के खुदा. अगर आज तक परमेश्वर तेरे भवन को इनने छोटा जाना है, कमजोर सा जाना है और ग्रो नहीं कर पाए हैं, तो आज से ये तेरे भवन को इज्जत देना चालू करें. From this day, let them honor your house. Let them give glory to your name in the house of God. और जो परमेश्वर तेरे भवन में बने रहे हैं पर हमेशा इज्जत नहीं दी है, आज से वो इज्जत देना तेरे भवन